नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 29 जो कि अपील के बारे में बताता है और इसको दो पार्ट में हम देख रहे हैं। एक 372 से 380 तक और दूसरा 381 से लास्ट तक इस चैप्टर का। तो इसमें अपील में क्या होता है कि सिविल मैटर में म्युनिसिपल कोर्ट या सिविल जज जूनियर डिवीजन या सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट से डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाईपास होकर के हाई कोर्ट में अपील किया जाता है। लेकिन क्रिमिनल मैटर में क्या होता है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास से आप सीजीएम को अपील कर सकते हैं या असिस्टेंट सेशन जज को अपील कर सकते हैं। असिस्टेंट सेशन जज से फिर आप एडिशनल सेशन जज को अपील कर सकते हैं या सेशन जज को अपील कर सकते हैं और एडिशनल सेशन जज के बाद आप हाई कोर्ट में अपील में जा सकते हैं कोई जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो इस तरह से देखते हैं कि 381 में कि अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड कैसे सुना जाता है। अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन में कैसे सुना जाता है, तो इसमें है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन सेशन जज shall be heard by the session judge or by additional session judge। ठीक है, एडिशनल सेशन जज हर्ड करेगा या सेशन जज उसको सुनेगा, है ना। दूसरा है कि एन अपील अगेंस्ट ए कन्विक्शन ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास मे बी हर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है, मतलब दो पॉइंट है, वो तो प्रोवाइजो था, इसलिए दूसरा पॉइंट कहता है कि एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल हियर ओनली सच अपील एज द सेशन जज ऑफ द डिवीजन मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर मेक ओवर टू हिम। उसको देता है तो या हाई कोर्ट देता है तो, और एज द हाई कोर्ट मे बाय स्पेशल ऑर्डर या डायरेक्ट हिम टू हियर, डायरेक्शन देता है या स्पेशल ऑर्डर रिटर्न में देता है। उसके बाद कहता है 382 की पिटीशन ऑफ अपील एवरी अपील शैल बी मेड, है ना। पिटीशन ऑफ अपील इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि एवरी अपील शैल बी मेड इन द फॉर्म ऑफ पिटीशन इन राइटिंग प्रेजेंटेड by the appellant or his pleader, and every such petition shall be accompanied by a copy of the judgment or order appealed against। ठीक है, एवरी सच पिटीशन क्या होगा, shall be accompanied by a copy of judgment और order होना चाहिए जिसको कि अपील में डालना है। उसके बाद 383 में देखिए कि प्रोसीजर व्हेन अपीलेंट इन जेल, अपीलेंट जेल में है तो क्या प्रोसीजर होगा। इफ द अपीलेंट इज इन जेल ही मे प्रेजेंट हिज पिटीशन ऑफ अपील। कहता है इफ द अपीलेंट कहाँ इज इन जेल, अपीलेंट जेल में है तो वो क्या बोल रहा है कि जेलर के थ्रू वह देगा पिटीशन और वह जेलर के थ्रू देगा और कोर्ट में फाइल हो जाएगा। इफ लेकिन ऐसा नहीं है, जेलर के थ्रू से वकालतनामा साइन करे दो, कोई कागज़ दो, साइन करके देगा, उसके बाद उसका एडवोकेट सीधे फाइल कर देगा, वो फीस देगा, उसके बाद एडवोकेट सीधे फाइल कर देगा। लेकिन यहाँ कुछ बोल रहा है उसमें सच्चाई नहीं, प्रैक्टिकल ऐसा कभी संभव नहीं है। इफ द अपीलेंट इज इन जेल ही में प्रेजेंट हिज पिटीशन ऑफ अपील एंड the copies accompanying the same to the officer in charge of the jail, he shall thereupon forward such petition and copy to the proper appellant court। मतलब जेलर प्रॉपर appellant court में आज तक नहीं किया और वो प्रेजेंट पिटीशन अपील जैसे जेल में पूरा टाइपिंग वाइपिंग का व्यवस्था किया हुआ है, तो ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। जेलर के थ्रू कोई भी कागज आप ले दे आदान प्रदान कर सकते हो, जेल कैदी को, प्रिजनर को, या आप उससे साइन करवा सकते हो किसी कागज पे। नेक्स्ट है 384 समरी डिस्पोजल ऑफ अपील। तो अपील को समरी डिस्पोजल कर देगा इफ अपॉन, समरी डिस्पोजल कर देगा कब, इफ अपॉन एग्जामिनिंग द पिटीशन, इफ अपॉन examining the petition of appeal and copy of the judgment received under section, the appellant court consider that there is no sufficient ground, there is no sufficient merit for the interfering
in the order or in the judgment, then it may dismiss the appeal को dismiss कर देगा. नहीं तो जजमेंट डिसमिस हो या अपील डिसमिस हो, ऑर्डर डिसमिस हो या अपील डिसमिस हो, दो में से कोई एक तो डिसमिस होगा. Provided that no appeal under section so and so shall be dismissed unless the appellant or his pleader had a reasonable opportunity of being heard in support of the same. Next, no appeal presented under section so and so dismissed except after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard in support of the same, unless the appellant court considered that the appeal is frivolous, छोटा मोटा है, and the production of the accused in custody before the court would involve an inconvenience, would be disproportionate in the circumstances of the case. In no appeal presented under section 383 shall be dismissed summarily until the period allowed for the preferring such appeal has expired. मान लो 7 दिन का पीरियड है तो 7 दिन बाद ही डिसमिस होगा, उससे पहले नहीं. 15 दिन में फाइल कर दिया तो 45 दिन और वेट करेगा. Before dismissing an appeal, the court may call for record of the case. Where the appellant court dismissing an appeal under this section is a court of session or chief judicial magistrate, it shall record its reason for doing so. When an appeal presented has been dismissed summarily under this section and the appellant court finds another petition of appeal duly presented on behalf of the same appellant had not been considered by it, the court may not, withstanding anything contained in section so and so, satisfy that it is necessary in the interest of justice to do so to do hear and dispose of any such appeal in accordance with the law. अब देखते हैं 385 जिसमें कहता है प्रोसीजर ऑफ हियरिंग अपील नॉट डिसमिस समनली, तो उसको डिटेल में सुनवाई होगा. फिर इफ द अपीलेंट कोर्ट डज नॉट डिसमिस द अपील समनली, it shall cause notice of the time and place at which such appeal will be heard to be given to the appellant or his pleader. Procedure for hearing appeal are not dismissed, तो कहेगा appellant court does not dismiss the appeal, नहीं करेगा. If it shall cause notice of time and place at which appeal will be held to be given to the appellant or his pleader, to such officer as the state government may appoint in this behalf. है ना? Procedure for hearing appeal are not dismissed, तो कहता appeal does not dismiss summarily, तो it shall cause notice of time and place, तो notice देगा, है ना? At which such appeal will be heard to the appellant को जो appeal किया उसको या उसके एडवोकेट को, और टू सच ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट में appoint in this behalf. If the appeal is from a judgment or conviction, तो complainant को complaint केस है तो. If the appeal is under 377, 378, the accused and shall also furnish such officer a complainant and accused with a copy of ground of appeal. ठीक है? Shall also furnish such officer complainant and accused with a copy of ground of appeal. किस ग्राउंड पे अपील किया है? The appellant court shall then be sent for the record of the case if such record is not available in that court, and here the party, provided that if the appeal is only as to extent or legality of the sentence, the court may dispose of the appeal without sending for the record. When the only ground for appeal and from a conviction is alleged severity of the sentence, the appellant shall not accept with the leave of the court urge or to be heard in support of any other ground. 386 Power of the appellant court. After pursuing such record and hearing the appellant or his pleader,
if he appears that the public prosecutor, if he appears, and the public prosecutor, if he appears that in the case the appeal number is not the accused, if appears, the appellant court may, if it consider and that there is no sufficient ground for interfering, dismiss the appeal. ठीक है, sufficient ground नहीं तो dismiss कर देगा. उसके बाद कहता है 387 जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट अपीलेंट कोर्ट. द रूल्स कंटेंट इन 27 as to judgment of criminal court of criminal original jurisdiction shall apply so far it may be practicable to the judgment or an appeal of a court of session or CGM. ठीक है, तो जजमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट की तरह वो काम करेगा अपील का ऑर्डर, provided that unless the appellant court otherwise directs, the accused shall not be brought up or required to be attend his her judgment delivered. उसके बाद कहता है 288 ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट टू अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट. सर्टिफाइड कॉपी लोअर कोर्ट में भेज दो. व्हेनेवर केस इज डिसाइडेड, है ना, कहता है whenever a case is decided by, on appeal by High Court and this chapter it shall certify its judgment or order to the court by which the finding, sentence or order such order appeal against was recorded or passed. If such court is of a special judicial magistrate other than the CGM, the High Court judgment or order shall be sent through the Chief Judicial Magistrate. ठीक है, and if the court is not of executive magistrate, the High Court judgment order shall be sent through the district magistrate. है ना, finding, sentence passed, and if such court is not CGM other than the CGM, is not judicial magistrate court other than CGM, the High Court send order through the CGM. यदि डीएम को भेजना तो सीजीएम के थ्रू भेजो. सीजीएम को भेजना है अपील का सर्टिफाइड कॉपी तो डीएम के थ्रू भेजो. ये कहता है कोर्ट टू विच द हाई कोर्ट सर्टिफाई इट्स जजमेंट ऑर्डर शैल देयरअपॉन मेक सच ऑर्डर एज conformable to a judgment or order of the High Court, and if necessary he shall be amended in accordance therewith. 289 suspension of sentence pending appeal, a release of appellant on bail. तो क्या कर रहा कि pending an appeal by a convicted person, the appellant court may, for reason to be recorded by it in writing, order that the execution of the sentence or order appeal against the suspended, also if it is in confinement, that he be released on bail on his own bond. ठीक है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हुआ, पेंडिंग अपील, रिलीज ऑन appellant on bail. Pending an appeal by a convicted person, the appellant court may, for reason to be recorded by it in writing, order that execution of sentence or order appeal against be suspended. ठीक है, if it is in confinement, that he may be released on bond. ठीक है, यदि सस्पेंडेड हो गया है ऑर्डर इम्प्रीजमेंट का तो रिलीज ऑन बॉन्ड होना ही चाहिए. प्रोवाइडेड द appellant court shall, before releasing on bail or on his own bond, a convicted person who is convicted of an offence punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for a term not less than 10 years, shall give opportunity to the public prosecutor showing cause in writing against such release. ठीक है, उसके बाद एक दो 394 तक है. कहता अरेस्ट ऑफ एक्यूज इन अपील फ्रॉम एक्यूटर. अरेस्ट ऑफ एक्यूज इन अपील फ्रॉम एक्यूटर.
When an appeal is presented under Section 378, the High Court may issue a warrant directing that the accused be arrested and brought before it or any subordinate court, and the court before which he is brought may commit him to prison, sending the disposal of the appeal or admit him to bail. अरेस्ट ऑफ एक्यूड इन अपील फ्रॉम एक्विटल, तो अरेस्ट हो जाएगा या बेल पे जाएगा। एक्विटल का आप अरेस्ट ये कर दिए हो। व्हेन एन अपील इज प्रेजेंटेड टू द हाई कोर्ट में इशू वारंट डायरेक्टिंग द एक्यूड बी अरेस्टेड एंड ब्रॉट बिफोर इट or subordinate court, and the court before which he is brought may commit him to prison, pending the disposal of appeal, admit him to bail. 391 कहता है appellant court may take further evidence or direct it to be taken in dealing with any special appeal under this chapter. The appellant court, if it think additional evidence is required to be taken, then it shall record its reason and may either take such evidence itself or direct it to the taken by magistrate, or when the appellant court is a high court, by a court of session or magistrate court. ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर वेयर जजेज ऑफ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड, तो उस थर्ड वन को भेजा जाएगा। इफ एन अपील अंडर दिस चैप्टर इज हर्ड बाय हाई कोर्ट और बिफोर द बेंच और जजेज, दे आर डिवाइडेड इन ओपिनियन, एन अपील इधर विथ देयर ओपिनियन शैल बी लेड डाउन बिफोर जज ऑफ दैट कोर्ट, एंड दैट जज आफ्टर हियरिंग, है ना, थर्ड जज मतलब shall deliver its opinion, judgment or orders or follow that opinion। ठीक है। उसके बाद फाइनलिटी ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर ऑन अपील, जजमेंट और ऑर्डर बाय एन अपीलेंट कोर्ट अपॉन अपील shall be accept as provided that notwithstanding the final disposal of an appeal against conviction in any case, the appellant court may hear the disposal on the merit and appeal against the acquitter and under section 328 arising out of the same case. Appeal for the enhancement of section. We appeal for the enhancement of sentence under 377 arising of the same section. Abatement of appeal, तो abatement of appeal को देखिए, every other appeal under section 377 378 shall finally abated on the death of the accused। ठीक है, abatement of appeal हो गया। every other appeal shall finally abate on the death of the accused, every other appeal under this chapter shall finally abate on the death of the appellant। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल देखेंगे चैप्टर 30 रेफरेंस एंड रिवीजन सेक्शन 395 से। थैंक यू दोस्तों, बाय।